Hello and a very warm welcome to today's session brought to you by Team Testbook Super Coaching. I hope all of you are doing really well. Good evening, Debashish, Dominator, Rajneesh, Prerna, Ayushi, Himanshi, Satendra, Kasturi, Divya, Debashish, Monica. Good evening, everybody. Good evening, Ethereal. I hope all of you are doing really well और आप लोगों ने अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया होगा. आज जैसा कि कल का एजेंडा हम लोगों ने स्टेट किया था, I was really impressed. I'm going to be discussing the comment section questions as well if time permits. हम लोग of course आपका ये पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल सेट के जो पेंडिंग पार्ट्स हैं उनको आज और कल में कवर करेंगे और ऑफ कोर्स आज का टॉपिक ऑफ द डे इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज योर ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू अमेरिकन पोएट्री. इस पर्टिकुलर बुक का जो पीडीएफ है, जस्ट लाइक मैंने आपको टेरी ईगल्टन की बुक का पीडीएफ दिया था, आई होप आपने उसको अच्छी तरह से स्किम थ्रू कर लिया होगा, अपने बाकी के 5 क्रिटिक्स को भी, बाकी के 3 क्रिटिक्स को भी देख लिया होगा. तो ठीक उसी तरह से इस पर्टिकुलर पीडीएफ को भी आई विल शेयर इट ऑन द टेलीग्राम प्लेटफॉर्म नीरजा मैम टेस्ट बुक इंग्लिश लिटरेचर हसलर्स. मैं आपको ये टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे दे दूंगी, आप उसको अच्छी तरह से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा. और वैसे भी कल भी हम अमेरिकन पोएट्री, पर्टिकुलरली 20th सेंचुरी अमेरिकन पोएट्री, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पीडीएफ है, हम लोग उसको भी अच्छी तरह से कवर करेंगे. तो आज और कल का जो दिन है दैट इज डेडिकेटेड टू अमेरिकन पोएट्री. ठीक है, इसको आप जितना ज्यादा टॉपिक को हमारे साथ कवर करने की कोशिश करेंगे उतना ही बेटर रहेगा. And of course, this book that we are having, it's actually a book that tries to make sure कि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल रही है ऑफ अमेरिकन पोएट्री. 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है, 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है. और कुछ कुछ इंसाइट्स जब भी आई रीड एन ऑक्सफोर्ड कंपेनियन, कुछ बहुत ही स्पेशल इंसाइट्स डेफिनेटली आपको मिलते हैं. These are small little booklets. I'll probably give you a tour, like one part of my library is actually just like all of these Oxford companions that we are having. But definitely I will be sharing इसका जो पीडीएफ है ताकि आप उसको रीड कर सकें. ठीक है, सो डू टेक अ टूर ऑफ इट, डू टेक अ लुक एट इट. इट्स अ ब्यूटीफुल बुक दैट इज रिटन ऑल टुगेदर दैट ट्राइज टू मेक यू अंडरस्टैंड एंड वॉक्स यू थ्रू द एंटायर प्रोसेस. क्योंकि ना कई बार क्या होता है, ऑफ कोर्स अब देखिए जब हम दिसंबर से अटेम्प्ट की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो इट इज ऑलवेज अ गुड आइडिया टू मेक श्योर कि हमारी फंडास बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो, हमारी बेसिक्स बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो. ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. ठीक है, गुड इवनिंग सुप्रतिम, गुड इवनिंग शबनम, गुड इवनिंग रानी, पूजा, कृष्णा. चलिए देरी नहीं करते हुए अंजलि, देरी नहीं करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं. ऑफ कोर्स आपको पता ही है दैट मंडे टू फ्राइडे रेगुलरली वी आर मीटिंग ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म एंड मेक श्योर दैट यू कलेक्ट द पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक फ्रॉम द टेलीग्राम प्लेटफॉर्म. अच्छा, अब देखिए ये जो एंटायर अटेम्प्ट है व्हेन वी आर लुकिंग एट ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू अमेरिकन लिटरेचर, ये जो बुक है, ये बुक सबसे पहले आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट के इट इज ट्राइंग टू हेल्प अस अंडरस्टैंड कॉन्टेक्चुअलाइज अमेरिकन लिटरेचर, अमेरिकन पोएट्री पर्टिकुलरली. और यहाँ पर आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद व्हाट एजरा पाउंड सेज. ठीक है, एजरा पाउंड क्या कहते हैं, देयर इज नो लॉन्गर एनी रीजन टू कॉल इट इंग्लिश वर्स. आप इसको इंग्लिश वर्स मत बोलिए. Even though Ezra Pound थोड़े से against the American verse के, I'll talk about that also. I'll be discussing that as well. Look at these lines. All the developments in English verse since 1910, are due almost wholly to Americans. So clearly you are able to see that 20th century writings में आपके American literature काफी important हो जाते हैं. उल्टा आने वाले टाइम में हम एक बहुत ही स्पेशल क्लास करने वाले हैं where we'll talk about American multicultural राइटर्स, जैसे अमेरिकन चाइनीज राइटर्स या अमेरिकन इंडियन राइटर्स. तो इस तरह से आपकी काफी सारी मल्टी कल्चरल आइडेंटिटीज भी जो आपके एग्जाम में भी पूछी जा चुकी हैं. सो क्लियरली 20th सेंचुरी वी वर एबल टू सी दैट अमेरिकन लिटरेचर राइसेस, अमेरिकन लिटरेचर अच्छी तरह से एक तरह से ग्रो हो जाता है, और अमेरिकन पोएट्री ऑल्सो पर्टिकुलरली. ठीक है, देयर इज नो प्रेजेंट रीजन टू थिंक ऑफ इंग्लैंड एट ऑल, राइट. सो पीपल हैड देयर ओन वर्जन्स. इवन टुडे वी डोंट रियली कंसिडर इंग्लिश टू बी अ कॉलोनाइजर्स लैंग्वेज. बैगेज जो है वो इंग्लिश के साथ बिल्कुल भी अटैच नहीं है. दैट इज समथिंग दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड. अब ये जो बुक है ये स्टार्टिंग में ही आपको क्लियर कर देती है दैट व्हेन यू आर लुकिंग एट अमेरिकन पोएट्री में एक डिफरेंट एलिमेंट है. अब देखिए चाहे वो वॉल्ट विटमैन हो जो एकदम नया स्टाइल ऑफ पोएट्री को स्टार्ट कर देते हैं, ही इज हैविंग अ कलोकियल स्टाइल ऑफ राइटिंग पोएट्री ऑल टुगेदर. बट क्लियरली आप क्या देख पाते हो दैट अमेरिकन स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है दैट इज अ न्यू स्टाइल ऑफ राइटिंग, दैट्स अ वेरी नोबल स्टाइल ऑफ राइटिंग. मैंने जानबूझ के ये वाला इमेज क्यों लिया था, I don't know if you know about
it, but peach fuzz is the color of 2024. जैसे color of the वो होता है ना, so peach fuzz का जो color है, that's a very lightish color. Brands are actually using this color altogether. And American literature भी वो newness लेके आ रहा था. American literature भी वो नया element लेके आ रहा था altogether. Good evening Gauri, good evening Future, good evening Supratim. Very good Gauri, very nice. आप अच्छी तरह से you're being very dedicated in both the sessions. It's very nice. यानी TQC disciplined होना बहुत important है. एक rhythm अगर आप लोग develop कर लेंगे तो trust me ये बहुत अच्छा हो जाएगा. ठीक है. Walt Whitman ने ये बोला भी था. ठीक है. Old forms, old poems, majestic and proper in their own lands. Here in this land are exiles. ठीक है. That we've got our own way of saying, Americans have got their own way of saying things. So clearly novelty, Ezra Pound कह भी रहे हैं कि हमारा American literature काफी different है. It is very different kind of writing that you're able to see. So American authors जो हैं, they are trying to say that we are developing a unique voice. So even before your Emerson is trying to talk about कि American scholar, right? Emerson आपको क्या बता रहे हैं? Emerson is trying to tell you about the American scholar. So even before Emerson actually discusses this, इससे पहले Emerson आपको discuss करे, what are you able to see? You are able to see that you're clearly able to see that how eventually आपका जो American writings है, they are creating a new mark for themselves, they're creating a new identity for themselves, they have a newness, a freshness altogether. तो पहले दो pointers जो Ezra Pound भी बता रहा है कि there is no English verse altogether, there is Americanness. Then you are able to see that other writers are also trying to talk about. Walt Whitman कह रहा है कि यहाँ पर old forms नहीं चलेंगे, they're all exiled, we have a unique style of talking about because our culture is different, our heritage is different, and we need to invent our own style of writing altogether. ठीक है. अब American poetry को start करते हुए, what are you able to see? I'll just make myself a little more small over here so that you'll be able to see. So American poetry के बारे में जब discussion ये start करते हैं, so you are able to see that Oxford Companion to American Poetry Anne Bradstreet को लेती है. Anne Bradstreet. Now Anne Bradstreet जो है, she actually did not even know that her works were actually getting published. Her brother-in-law surreptitiously got it published altogether, right? Good evening, Lichi. Good evening. So ये जो है, she is the first poet living in America, and इन्होंने the 10th muse lately sprung up in America by a gentlewoman in those parts, right? So this was actually getting published in London. Now what I want you to remember is the plain style of writing. So Oxford Companion to American Poetry आपको ये बताती है that there's a very plain style of writing that Anne Bradstreet is actually trying to follow. Her father, her husband, they were governors of Massachusetts Bay Colony. She was taught at home. Bradstreet was taught at home. She learned Greek, she learned Latin, she learned French. मैंने अभी जब हम लोग 8:30 PM की क्लास में रोमन लिटरेचर को कवर कर रहे थे, when we were talking about writers like Livy, we were talking about writers like Cicero. Cicero का जो speech है, that's the starting point of the golden period in Roman literature, and Ovid के death से Roman literature का golden period end करता है. Remember we also talked about how Seneca the senior and Seneca the younger and Juvenal, these are two important Roman people who are associated from the silver period in Roman literature. So I hope you're able to recollect that as well, right? I hope you're able to recollect that as well. Thanks Gauri, thanks. Right, Rani, she's absolutely right. आप ना video quality थोड़ा सा वो कर लो, you'll be able to see it. अच्छा वो आपको blurry दिख रहा होगा, right? अच्छा वो there's a Punjabi song also ना, सब कुछ धुंधला धुंधला है. Okay, so what are we able to see over here? We are able to look at के कैसे किस तरह से Anne Bradstreet is actually getting herself, like she's getting herself taught altogether, and at the age of 18 she's going to America with her husband and father, right? 10th muse lately sprung up in America by a gentlewoman. ये please याद रखिएगा, ठीक है? By a gentlewoman. ये किसने publish किया था? Her brother-in-law had published it. Just like Emily Dickinson के works, after her death you're able to see that her sister's actually doing that, right? And we'll talk more about that. So please keep that in mind that how अच्छा अब देखो, the beauty of this particular book Oxford Companion to American Poetry is कि Anne Bradstreet के बाद वो आपको Phyllis Whiteley नहीं दे रहे हैं.
एंड ब्रैडस्ट्रीट को वो कंपेयर कर रहे हैं वॉलेस स्टीवन से, और हम लोग इसको देखेंगे, इस कंपैरिजन को अभी हम लोग देखेंगे, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो यू नो द 10th muse lately sprung up in America, or several poems compiled with great variety of wit, look at it, with great variety of wit and learning full of delight, wherein especially if contained a compete, so you know the description, brief description, elements, etc. तो पूरा का पूरा there is a mention altogether, right? This is the cover page that you are able to see of the book that is coming by Anne Bradstreet, right? So Anne Bradstreet का जो पूरा का पूरा वर्क आपके सामने आ रहा है, Anne Bradstreet का जो वर्क हम देख पाते हैं, this is basically the cover page. rather cover page important works के आप देखिएगा, जैसे इसमें से सबटाइटल से क्वेश्चन आ जाते हैं, डेडिकेटेड किसको है, कौन सा एडिशन आया है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया दैट इफ यू कवर इट प्रॉपरली, ठीक है. अच्छा, अब प्लीज याद रखिएगा दैट यू नो एन ब्रैडस्ट्रीट का, वी ऑफन फॉरगेट दिस वेरी इंपॉर्टेंट वर्क जो हमें ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू अमेरिकन पोएट्री याद दिलाती है. ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू अमेरिकन पोएट्री हमें कहती है कि अ डायलॉग बिटवीन ओल्ड इंग्लैंड एंड न्यू, ठीक है, कंसर्निंग देयर प्रेजेंट ट्रबल्स 1642 बाय एन ब्रैडस्ट्रीट. ये हम अक्सर भूल जाते हैं, ये वर्क जो एन ब्रैडस्ट्रीट का है, ये मैंने और किसी भी बुक में ज्यादातर हाईलाइटेड नहीं देखा है. इतने सारे अमेरिकन लिटरेचर के जो बुक्स होते हैं उसमें कहीं पे भी ये वर्क को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, बट यहाँ पर दैट इज व्हाट अमेरिकन यू नो ऑक्सफोर्ड कंपैरेटिव अमेरिकन पोएट्री आपको बताना चाह रहा है, दैट डोंट फॉरगेट दिस वर्क, क्योंकि एन ब्रैडस्ट्रीट इज जस्ट नॉट राइटिंग ऑन कॉमन थीम्स, शी हैज द इंटेलिजेंस टू कंपेयर यू नो ओल्ड इंग्लैंड फ्रॉम न्यू इंग्लैंड, राइट. अमेरिका को क्या कहा जा रहा है, अमेरिका को कहा जा रहा है न्यू जेरूसलम, न्यू इंग्लैंड, where the Puritans were not able to set up their ideal society. लंदन में वो नहीं कर पाए, वो ब्रिटेन में नहीं कर पाए, though that was old England, they have come to new England. So how beautifully you are able to see that you know two important words are actually presented. So Bradstreet जो है, she is trying to talk about it. So यहाँ पर you know in the poem America addresses England. England is about to face a civil war. England is about to face a civil war, and America is questioning England over here. Okay, so clearly, or, you know, there is a notice of old England's downtrodden state. New England is saying, "What means this wailing tone, this mournful guise? Tell thy daughter, she may sympathize." All right, so clearly there is this entire assertion of pride that you are able to see for the very first time in American literature. The people over there, देखो, अभी हम क्या कहते हैं that America is the land of dreams. America of course is struggling a little bit, but we are largely able to see that in 20th century, 21st century, America actually emerged as a kind of a super global power, like global superpower. तो आप यहाँ पर क्या देख पाते हो, आप यहाँ पर देख पाते हो that clearly there is a mention that you know when we look at a dialogue between old England and new, and Bradstreet is saying that America is proud, America is looking at old America and saying, see, आप लोगों के पास तो political stability नहीं है. Okay, and what are you able to see? Old England admits the guilt she feels over her debased religious state. My sins, the breach of sacred laws, the breach of sacred laws. I did not give importance to religion, be it Catholic religion or Puritan. अब यहाँ पर of course क्योंकि एन ब्रैडस्ट्रीट एक हार्डकोर प्यूरिटन राइटर भी एक तरह से आ रही हैं, तो वो पार्ट आ रहा है. But how beautifully two political aspects are presented by one of the first important American poets that you are having. ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है. अनफॉर्चुनेटली ये कोई भी यू नो अ डायलॉग बिटवीन ओल्ड इंग्लैंड एंड न्यू एंड ब्रैडस्ट्रीट की जो पोएम है, ये कोई बुक हमें हाईलाइट ज्यादातर नहीं करवाता है, बट यहाँ पर आपको पता चलता है. ओके, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड. एंड यू नो शी नेवर सफिशिएंटली आंसर्स हर डॉटर अमेरिका को. सो इन ओल्ड इंग्लैंड इज द मदर, न्यू इंग्लैंड इज द डॉटर. न्यू इंग्लैंड वांट्स टू सिंपैथाइज विद ओल्ड इंग्लैंड, तो एक तरह से फैमिली रिलेशनशिप भी दिखाया गया है. until New England presses, pray in plain terms, what is your present grief, right? What is your present grief? So please remember this, please keep this in mind, that when we are talking about 10th muse lately sprung up in America by this gentle woman that we are able to see, इस particular work की writer and Bradstreet is also writing a dialogue between old England and New England. ठीक है, a dialogue between old England and New England. New England America, the daughter is asking the mother,
what has happened to you? You are staring at an imminent civil war. That is very important. ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए. 10th न्यूज लेटली sprung up in America. उससे पहले we were talking about कैसे वॉल्ट विटमैन, कैसे आपका even Ezra Pound is saying that there is a new style of writing that American poetry is talking about. Okay, see, well, to the matter then, there is groan the late twisting king and peers a question of state. What is the chief law, or else the king one saith he is, the other such no such thing. ठीक है, ये बेसिकली क्या हो रहा था इंग्लैंड के अंदर ना, इंग्लैंड के अंदर यू वर एबल टू सी कि एट दैट पर्टिकुलर टाइम आपका विग्स एंड टोरीज का डेवलपमेंट हो रहा है, मोनार्की को थ्रेटन किया जा रहा है. एंड अदर 50 years you will be able to see कि कैसे रॉबर्ट वॉलपूल्स फादर, so when we are talking about Robert Walpole, Horace Walpole's father becomes the prime minister, his corrupt government comes into place altogether. तो कैसे मोनार्की को थोड़ा थोड़ा करके हल्का हल्का करके डिस्टेबलाइज किया जा रहा है, राइट, मोनार्की को हल्का हल्का करके डिस्टेबलाइज करा जा रहा है. एंड क्या क्या चीजें आ रही हैं. एंड रिमेंबर सिविल वॉर कैसे, रिमेंबर चार्ल्स द सेकंड का कोई सन नहीं था. So Charles II के brother James II was coming, but James II was a Catholic, therefore there was a problem over there. ठीक है, तो ये political aspects आपके आ रहे हैं. So dialogue between Old England and New England, that is again another important work of Anne Bradstreet जो आपको ध्यान में रखना है. Okay, so please make a note of this because like I said, a lot of times we forget the work. देखो जब आपका PhD entrances में पूछा जाता है ना, women writers don't have political insights, आप ये सारे examples दीजिए. This shows depth in your answers. When you're giving these kind of answers, आपके answers को perspective मिलता है. That one of the first few women writers, say for instance Anne Bradstreet, has talked about a political thing, even though she was going with her husband and father to Massachusetts Bay Colony, and she was self-taught, etc. But it's her work is not restricted to only writing about love poetry or domestic poetry. She's also talking about political concerns. ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी. Alright, please keep that in mind. Of course, Anne Bradstreet का जो style of writing है, that is a plain style of writing, because she was at the heart. देखो, most of these writers, because America had white Puritan hegemony. पहले अमेरिका का क्या था? पहले अमेरिका का we were able to see there was clearly a white Puritan hegemony that you were able to look at, right? आपका जो white Puritan hegemony था, that was clearly visible. So obviously, America, you are able to see that, no, Himanshi, no. This is not the first work. This is not the first work. So 10th Muse lately sprung up in America is actually trying to collate most of her writings and get it together, right? To My Dear and Loving Husband is a separate poem that she's written. So this is not the first work of Anne Bradstreet. और Anne Bradstreet publishing के लिए लिख ही नहीं रही थी. तभी मैंने आपको ये लाइन दिखाई थी ना, brother-in-law ने publish करवाया था. This is the reason I was telling you this, that the brother-in-law had got it published. So please remember that. इसको एक बार go through भी कर लीजिएगा so that you will be able to get it. So obviously Puritans did not believe in art. Puritans did not believe in artistic writings altogether. तो art में तो ये लोग बिल्कुल भी believe नहीं कर रहे थे. That is something that you were able to see altogether. ठीक है? So please keep that in mind. So एक plain style. And remember a conversation between Old England and New also. At the end, the daughter is saying, ठीक है, आपका grief है, express it in plain words. That is what everybody does, right? Consultants क्या करते हैं? Consultants जो problem statement होती है उसको simplify करते हैं. Consultants जो problem statement होती है उसको अच्छी तरह से simplify करके बताते हैं. That is what they are trying to do. Okay, so please remember that it's a very simple style of writing altogether. जो आपके बाकी Puritans भी थे, they were also trying to follow this style of writing. So when New England urges Old England to speak in plain terms, she is admonishing Old England to follow her own example and act in the true Christian fashion, be frugal. अब imagine Gulliver's Travels में भी Jonathan Swift यही बोलते हैं, the pernicious odious vermin that has ever come on the planet, that is mankind. क्योंकि you have forgotten to be simple, you've forgotten to be frugal, you've forgotten to be you've forgotten how to make sure that you're plain altogether. So यहाँ पर वो Puritan virtue आ रहा है, राइट? यहाँ पर एक तरह से आपका वो जो प्यूरिटन वर्च्यू है, दैट इज समथिंग व्हिच इज कमिंग अक्रॉस, दैट यू हैव टू बी अ लिटिल मोर माइंडफुल ऑफ. तो वो जो प्लेन स्टाइल ऑफ राइटिंग है, राइट, वो जो प्लेन स्टाइल ऑफ राइटिंग है, प्यूरिटन प्लेन स्टाइल, वो आ जाता है. अब देखो,
ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू अमेरिकन पोएट्री, अब जहां पर एन ब्रैडस्ट्रीट और एन ब्रैडस्ट्रीट के वर्क को बता रही है दैट दिस इंटायर वर्क द कॉन्वर्सेशन बिटवीन ओल्ड इंग्लैंड एंड न्यू इंग्लैंड, अब सडनली वो फिलिस वाइटली के ऊपर नहीं जाती है और एंथोलॉजीज पोएट्री के क्या करेंगी, क्रोनोलॉजिकली बताएंगी कि भाई एन ब्रैडस्ट्रीट, फिलिस वाइटली, फिर उसके बाद आपके maybe Jupiter Hammond etc, like और आपके राइटर्स आ रहे हैं, then you are having your Emily Dickinson and Walt Whitman। लेकिन यहाँ पर ही आपको कह रहे हैं हैंग ऑन अ बिट, कंपैरिजन पोएट्स जो अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में कर रहे हैं, उनमें से एक और इंपॉर्टेंट पोएट है आपका वॉलेस स्टीवंस। वॉलेस स्टीवंस बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो 300 इयर्स के बाद वॉलेस स्टीवन इज आल्सो ट्राइंग टू टॉक अबाउट अमेरिकाज रिलेशनशिप विद इंग्लैंड, अमेरिकाज रिलेशनशिप बिटवीन इंग्लैंड ऑल टुगेदर। और वो कहते हैं कि अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, पोइट्री का रिलेशनशिप है, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स का नहीं है। पोइटिक ट्रेडिशन का इनका एक तरह का रिलीजन रिलेशनशिप आ जाता है। ओके, तो स्टीवंस जो है ऑटम रिफ्रेन, ठीक है, ऑटम रिफ्रेन, ये दो तरह की बर्ड्स के बारे में। ऑटम रिफ्रेन के अंदर व्हाट इज ही ट्राइंग टू टॉक अबाउट, इन ऑटम रिफ्रेन ही इज ट्राइंग टू टॉक अबाउट दीस टू काइंड ऑफ बर्ड्स दैट आर देयर, दीस टू काइंड ऑफ बर्ड्स दैट आर देयर, ठीक है। फर्स्ट द स्पीकर इज रिमेंबरिंग हियरिंग क्रैंकल्स, क्रैंकल्स अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी, क्रैंकल्स काइंड ऑफ, आप गूगल करेंगे तो आपको ये जो ग्रैकल, ग्रैकल की जो वर्ड है उसकी पिक्चर आपको पता चल जाएगी। ग्रैकल जो वर्ड है श्रीक करती है, स्किटर करती है इवनिंग में, ठीक है। एंड सो द क्रैकल्स गॉन, सॉरोज ऑफ द सन, द सॉरोज ऑफ द सन टू गॉन। तो दो वर्ड्स जो दो आपके लोकेशंस को रिप्रेजेंट करती है, वॉलेस स्टीवंस उसको दिखा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ image of that bird that you are able to see, but आप इसको थोड़ा सा गूगल करेंगे तो you'll be able to get it all together। so how your inelegant जैसे crow हो गया, crow and maybe a beautiful bird that you are having, compare it with that, right? So the inelegant grackle which is coming, right, the inelegant grackle that is coming in hardly resembles the nightingale, right? So iska absence poet is of course lamenting, right? So clearly not a bird for me, but the name of a bird, the name of the nameless air, I have never, shall never hear, shall never hear. So again, what are you able to see? You are able to see that Wally Stevens is trying to tell you that the relationship between America and England is a poetic relationship. In Autumn Refrain also, he's trying to take these two birds, trying to talk about these two birds, the differences that are there. Technically, they're same family, birds. But on the other side, they have a lot of differences. On the other side, you're able to see a lot of things that are actually different altogether. ये भी आप उसको देख पाते हो. So Stevens or Bradstreet, right? So Stephen is trying to tell you, Stephen Autumn Refrain के अंदर, what is he trying to tell you? He is trying to also tell you कि modern American poet को क्या क्या challenges भी face करने पड़ते हैं, ठीक है. Now please remember, because there is a distance of time and geography, American poet cannot directly experience the nightingale, right? Because हमारा, see again, we don't for instance when you talk about Christmas trees etc, अभी Christmas आ रही है या आपका कुछ भी, कई बार हमारा लोकेशन उसको उसको परमिट ही नहीं करेगा, राइट? हमारा जो लोकेशन है, आपका कुछ कॉनिफरस ट्रीज हो गई या कुछ आपकी ऐसी वाली चीज हो गई जो सिर्फ आपको ठंडी जगहों पे मिलती हैं, वो हम लोग, हमारा हमारा टॉपिकल कंट्री है, ट्रॉपिकल कंट्री में कहाँ से हम उगा लेंगे? So even if we want to talk about the nightingale, we can't really talk about the nightingale as something that he's trying to talk about, right? He's trying to be very realistic over here. He's trying to be very realistic over here that even if the poet wants, right, to take inspiration, as many people will tell, that source is not available at all, ठीक है. तो क्लियरली वो कहना चाह रहा है कि अमेरिकन और इंग्लिश पोएट्री अलग है. यहाँ पर आपका ग्रैकल आ रहा है, राइट, और वहां पर आपका नाइटिंगेल आ रहा है. डिफरेंट क्लाइमेट्स हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग वो सारी सेम चीजें तो एक्सपीरियंस कर नहीं सकते हैं. एंड एज अ पोएट, एज अ राइटर, आपने क्या करना है, यू हैव टू टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंसेस. Sorry, so how in autumn refrain you are able to see that the poet is able to highlight, and tell us that American poet or
आपका इंग्लिश पोएट डिफरेंट है, उनके ओवरऑल एक्सपीरियंसेस आर वेरी डिफरेंट, राइट? उनके जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं दोज आर एब्सोल्युटली डिफरेंट, दैट इज व्हाट यू आर एबल टू लुक एट. And suddenly, after giving Wally Stevens example, okay, I'll just reduce the size so that you'll be able to see. After giving us Wally Stevens example, what he suddenly does, what the Oxford Companion to American Poetry does is it takes us to Langston Hughes. Now imagine from Anne Bradstreet comparing England and America in conversation between Old England and New England to Wally Stevens talking about autumn refrain. दैट एक क्रैकल जो ग्रैकल है और नाइटिंगेल है, ग्रैकल अमेरिका में है, नाइटिंगेल लंदन में है, चाह कर भी हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, तो दोनों की एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है. सडनली ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू अमेरिकन लिटरेचर विल ट्राई टू टेल यू अबाउट, सो कैसे थीमेटिक कनेक्शंस आ रहे हैं, कैसे थीमेटिक कनेक्शन स्टोरी की तरह आप पोएट्री को याद कर रहे हो, उन पोएट्स को याद कर रहे हो. लैंगस्टन ह्यूग्स अगेन, द नीग्रो स्पीक्स ऑफ द रिवर्स. अभी हम लोग एक वर्क को भी करने वाले हैं, दैट मोन्टाज ऑफ अ ड्रीम डेफर्ड. अभी वेस्ट बंगाल सेट का जो क्वेश्चन है लैंगस्टन ह्यूग्स ने लिखा है, मोन्टाज ऑफ अ ड्रीम डेफर्ड, राइट? सो द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर as a train he took from St. Louisa to Mexico to visit the father passed over the Mississippi altogether. अच्छा प्लीज याद रखना ट्रैवल मेटाफर, अभी इसको हम देखेंगे भी. लैंगस्टन ह्यूज सेज दैट, एंड वी विल बी डिस्कसिंग. इसमें और भी इंटरेस्टिंग तरीके से बताया गया दैट हाउ अ लॉट ऑफ पीपल सी, ऑब्वियसली जब लॉकडाउन था तो हमें कितना अच्छे से पता चल रहा था द इम्पोर्टेंस ऑफ गोइंग आउट, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग आउट, द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट बीइंग आउटसाइड ऑल टुगेदर, राइट? Remember we all were aware about it. So Hughes was 17 years old. All day on the train, I had been thinking about my father and his strange dislike for his own people, right? I didn't understand it because I was a Negro and I like Negroes very much. कितनी पावरफुल लाइन उसने बता दी है that unfortunately the father started hating his own community, but I really love Negroes, that's my community. Langston Hughes is talking about it. So the Negro speaks of rivers is actually loaded, colloquial language है, simple language है, but loaded message आ रहा है. The message is very loaded altogether. That is what you are able to see. The travel metaphor, so Langston Hughes ka The Negro Speaks of Rivers, you are able to see that how the Negro speaks of rivers, the beautiful lines are actually coming in. The Negro speaks of rivers. So, कई बार इस तरह से भी, especially because it's December and January and we have the luxury of time, let's get into the in-depth expertise, let's get into gathering more information and reading and perfecting our knowledge. That is something which is very important. ठीक है. और उसी के बाद because we are talking about travel, we are discussing about travel in the Oxford Companion, they actually take us, this book actually ensures and takes us to the writings of Elizabeth Bishop, right? आप यहाँ पर क्या देख पाते हो, you are able to see the writings of Elizabeth Bishop. Bishop की writings are coming over here essentially because travel metaphor is coming. Langston Hughes का travel आ रहा है, right? So when the Negro speaks of rivers, he's traveling and then he is noticing while he's traveling. ठीक है. तो ट्रैवल मेटाफर को पहले लैंगस्टन ह्यूग्स की पोएम से बताया, द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर. सेकंड किससे बताया? सेकंड एलिजाबेथ बिशप के वर्क से बताया. एलिजाबेथ बिशप वाज आल्सो ट्रैवलिंग वाइडली, वाज हॉन्टेड बाय इवेंट्स अर्ली इन हर लाइफ ऑल टुगेदर. ठीक है. बिशप वाज बोर्न इन मैसाचुसेट्स, वॉचेस्टर, राइट? एंड you were able to see she had tragic family circumstances. Her father died, right? So clearly, and mother also had psychiatric hospital visits altogether. So clearly you were able to see she'd gone to Nova Scotia and Massachusetts. So Nova Scotia and Massachusetts, she was actually getting raised altogether. So Elizabeth Bishop, travel वाला जो metaphor आ रहा है, कहाँ लैंगस्टन ह्यूग्स ट्रैवल कर रहा है, नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर में ट्रैवल के टाइम पर उसको याद आ रहा है कि माय फादर सेड दैट ही डजंट लाइक हिज कम्युनिटी बट आई लाइक देम वेरी मच. बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, राइट? बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है. एंड व्हाट आर यू एबल टू सी? यू आर एबल टू सी दैट एलिजाबेथ बिशप, राइट? सो फॉर इंस्टेंस दे आर ट्राइंग टू कवर एलिजाबेथ बिशप. I'll try to reduce this thing. So when we are talking about Elizabeth Bishop के a lot of other works are also something that are being discussed. इसको हम लोग और elaborate भी करेंगे. उल्टा एलिजाबेथ बिशप को थोड़ा सा हम लोग करने भी वाले हैं कल की क्लास में, बिकॉज आपका अमेरिकन पोएट्री हम लोग दोबारा देखेंगे. तो आप देख पा रहे हो कि वॉली स्टीवेंस के साथ
आपका एंड ब्रैडस्ट्रीट का कंपैरिजन कंपेयरिंग इंग्लैंड एंड अमेरिका, वॉली स्टीवंस ऑटम रिफ्रेन में गार्टकल के साथ नाइटिंगेल को कंपेयर कर रहा है, ग्रैंकल के साथ गार्टकल के साथ नाइटिंगेल को कंपेयर कर रहा है. Then when we are talking about here Langston Hughes and Elizabeth Bishop, the travel metaphor that comes in altogether, that is also something that you're able to see and you'll have to remember. तो clearly आप क्या देख पाते हो, आप देख पाते हो that इस companion का एक main motive क्या है. इस companion का एक main motive है for you to appreciate American writers, for you to understand American writings, but at the same time it doesn't wants you, ठीक है, at the same time it doesn't wants you to basically understand it in the conventional way, sequential way, but look at it thematically, the richness of American poetry that we're able to see. And of course, you know, American poetry ki discussion, Ezra Pound, the expatriate writer ke bina to absolutely incomplete hai. This is something which is, which is primarily incomplete. So this also, of course, becomes important for us to take a look at. See, Ezra Pound jo hai na, you are clearly able to see, of course, he talks about, he says that American poetry was a key was a key development in ensuring कि आप changes देख पा रहे हो. He was one of the first people to say that Americans actually changed the literary canon, changed the literary tradition altogether. ठीक है, और English words तो है ही नहीं, यही हमारा starting point था आज का. This was the starting point for today's class, right? That in fact there is no longer any reason to call it English words. There is no present reason to think of England at all. There is no present reason to think of England at all, right? This is clearly something that you're able to largely see. So Ezra Pound jo the, he denounced English words. He said that it is not true. So he was the American expatriate like T.S. Eliot living. जब हम लोगों ने when we अभी we did Terry Eagleton का 5 critics who changed the way we read. So Terry Eagleton का one of the first critics was T.S. Eliot. I told you about T.S. Eliot also. वहाँ पर Terry Eagleton also says he's an expatriate poet. So these were people who were coming from America and settling in European regions, trying to understand the flavor, trying to talk about tradition also. ठीक है, तो यही चीज आपको पता चल जाती है. And therefore they are trying to also popularize the term world citizenship. एक तरह से they are popularizing. देखो, now Ezra Pound, of course, he's a pioneer. I'll just reduce 1 second. Right. So Ezra Pound, when you're talking about Ezra Pound, what are you able to see that, देखो, when he was reading Whitman, he did not like Whitman. Like Naipaul also, an area of darkness, जैसे वो लिख रहे हैं, तो Pound actually felt disgust. He had disgust for his native country. ठीक है, he is America. Pound wrote of Whitman, his crudity is exceeding great stench, but it is America. So he was not at all. तो ये आपका क्वेश्चन आ भी सकता है. Ezra Pound किसके बारे में कहते हैं that he had disgust after reading his writings? Whitman के बारे में. ठीक है, Whitman was considered to be the pioneering figure of American poetry. तो ये Oxford Companion to American Poetry आपको ये भी sensitize कराती है that the man who is responsible, who has helped in the publication in producing Wasteland for T.S. Eliot, he otherwise also helped a lot. ये देखो, Ezra Pound served as William Butler Yeats's private secretary. He edited T.S. Eliot's The Wasteland. He helped the careers of writers like James Joyce, Robert Frost, William Carlos Williams, H.T., Ernest Hemingway, Ford Madox Ford, Marianne Moore, इन सबके careers को help किया. ठीक है, and he also founded imagism के बारे में अभी we'll talk about it. Ezra Pound के imagism के बारे में Oxford Companion क्या कहती है, but he was the one, he said, I have disgust when I look at Whitman. He was very clear about it. Right, he's saying I had disgust when I looked at Whitman. There are no two ways about it. He's very clear about it. ठीक है, तो ये भी चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है that when he was talking about Whitman, he said I'm disgusted. I'm not happy looking at these kind of writings altogether. Imagism के major tenets क्या थे? What were the major things that imagism was actually trying to talk about? तो imagism आपका क्या बोल रही थी? सबसे पहले तो याद रखिएगा, it is directly treating the thing. It is directly treating the thing. That means जो है जैसा है आप उसको ही represent कर रहे हैं. ठीक है, जो है जैसा है आप उसी को ही represent करेंगे. That is what you're going to do. To use absolutely no word that does not contribute to the presentation, you'll be minimalistic. Right? IKEA जो brand है, why is it it's of course known for do it yourself tradition, but it's also minimalistic.
आपकी जो आपकी जो जनरेशन है, ब्लैंडिफिकेशन, ब्लैंड रखना, बेसिक रखना, राइट, सो मिनिमलिस्टिक रखना. As regarding the rhythm, to compose in sequence of musical phrase, not in sequence of metronome. राइट, म्यूजिकल फ्रेज नॉट इन टर्म्स ऑफ मेट्रोनॉम. ऐसा नहीं कि फॉर द सेक ऑफ राइमिंग आप उसको कर रहे हो, ठीक है. सो क्लियरली डायरेक्टनेस, इकोनॉमी, फॉर्मल इन्वेंशन, ये सारा इंपॉर्टेंट था आपके लिए, right? It was a movement that was trying to focus on conciseness, on making sure that you are trying to be as precise as possible, right, as precise as possible altogether. And Ezra Pound very famously said, so pentameter was a form that was obviously most used altogether to break the pentameter. That was the first heave, all right. So what are you able to see? He said pentameter, to break the pentameter. He said, why should we use the old style of writing? अब यहाँ पर कंपेयर करो डीकंस्ट्रक्शन, जैक्स डेरिडा, व्हाई इज ही डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. जैक्स डेरिडा, अच्छा आज मैंने एक वीडियो अपलोड करवाई थी जूडिथ बटलर के ऊपर, जेंडर परफॉर्मेटिविटी के कॉन्सेप्ट, हेट्रोसेक्सुअल मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर. आई होप आप लोगों ने वो अच्छी तरह से गो थ्रू कर ली होगी. मैं उसके साथ आपको थोड़ा सा रीडिंग भी प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपका क्वेर स्टडीज का जेंडर परफॉर्मेटिविटी का एस्पेक्ट क्लियर हो जाए. अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली सीन दैट वीडियो? प्लीज टेल मी which critic says, maybe you can put in the comment section या फिर अभी डिस्कस कर लेते हैं. Which critic says that women knows that she is acting in a feminine way to make sure that she is getting her work done. So which critic talks about it? जल्दी से बता दीजिए. Which critic talks about it? Have you seen that video? मैंने वैसे दोनों टेलीग्राम ग्रुप्स पे भी डाला था. I don't know why you've not seen that. Which critic talks about it? So remember Joanne Revere, right? Joanne Revere. We had talked about it. Very good, Tanmay. Very good, Tanmay. Excellent, Tanmay. Very nice, right? Excellent. Please remember ये सारी चीजें आपको अच्छी तरह से करनी चाहिए. Very good, Tanmay. So again, what are you able to see? You are very good, Abhishek Pal. Very nice, Himanshi. Very good. Okay, Supratim, please watch that video. Bache, I've sent it on the Telegram group as well. Please watch that video. Regularly, every alternate day, pe aapki concept video bhi live jayegi. So please make sure that you are watching those videos as well. Okay. So again, to break the pentameter, that is what is being spoken about. So you're trying to break away deconstruction. आप एक तरह से कर रहे हो. And the same Oxford Companion is trying to tell you about the पिसान कैंटोस. आपको पता है ये अमेरिका को इतना ज्यादा जो क्रिटिसाइज कर रहे थे ना, इसकी वजह से ही वाज आल्सो हेल्ड हॉस्टेज. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सेडिशन आप करते रहोगे और आपको कुछ इसका फल नहीं मिलेगा. ही वाज आल्सो हेल्ड हॉस्टेज. सो ये जो अमेरिका का थोड़ा क्रिटिसाइज कभी कभी कर देते थे, तो ही वाज हेल्ड हॉस्टेज. तो द पिसान कैंटोस हैड कम. सो पिसान कैंटोस खुलता कैसे, ओपनिंग कैसे होती है? एलिजी फॉर द फैशिस्ट लीडर मुसोलिनी. ये क्वेश्चन आपका आता भी है, तो रिमेंबर दैट. So while Pound was traveling and he was at Pisa, he had written the Pisan Cantos altogether. It wasn't completed altogether, right? And you are able to see that it is opening with the elegy of the Italian fascist leader Benito Mussolini, and it is lamenting the lost fascist dream, the enormous tragedy of the dream and the peasants' bent shoulders, right? So the lost fascist dream altogether, that is something which is spoken about over here. Okay, and clearly you are able to see, if you had a brain, you'd be dangerous, right? So clearly that, and this is something जैसे आपके जो dystopian writings है 1984, या आपके जॉर्ज ऑरवेल के writings 1984, Animal Farm, या फिर आपके other dystopian works, they also say that nobody wants a thinking brain. So that man thinking that Emerson talked about in his essays is actually not something that the authorities want. That isn't what the authorities want. The authorities don't want somebody who's going to be actually thinking, right? The authorities don't really want somebody who will be actually thinking altogether. So Ezra Pound, like I told you, he was also arrested, by the way. Okay, he was arrested on grounds of treason because इतना ज़्यादा अमेरिका के थोड़ा against भी बोल रहे थे. He's supporters like T.S. Eliot, they ensured came.
he came out, but he obviously had to have this criminal persecution as well. So again, Ezra Pound, very fascinating figure to study altogether. और ये वाली parts, you know, mostly क्या होता है, हम लोग सिर्फ Ezra Pound को as the pioneering images writer याद रखते हैं, but we very often forget all of these. But that is something which we really need to remember. जैसा मैंने आपको कहा कि you know we will be actually continuing, we will of course be continuing with this discussion tomorrow also. एंड फिर उसके बाद बहुत जाके देरी में जाके यू नो द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इंग्लिश लिटरेचर्स टॉकिंग अबाउट फिलिस वाइटली also how she's the negro who's been purchased, how Whiteley Phyllis Whiteley is writing poems on various subjects religious and moral 1773, poems on various subjects religious and moral 1773, Phyllis Whiteley क्या ये लिख रही हैं. So you know, poems on various subjects religious and moral, this is what Phyllis Whiteley is actually writing. This is what Phyllis Whiteley, Negro servant to Mr. John Whiteley of Boston, New England. ये भी आपका लिखा गया है, Negro servant, right? Negro servant to Mr. John Whiteley, Negro servant to Mr. John Whiteley. That is also written over here. That is what you are able to see, okay? So again, this is how you're able to see that the Oxford Companion to American Poetry actually beautifully ties up the ideas. हम लोग इसको भी कंटिन्यू करेंगे. मैं आपको वैसे भी आज टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे दे दूंगी जाने से पहले, क्योंकि याद है हमें वेस्ट बंगाल सेट के पेपर को भी इस हफ्ते कंप्लीट करना है. तो कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं. Who is the author of the Black Hill? Who is the author of the Black Hill? Who is the author that we are able to see of the Black Hill? जल्दी बताइए. Who's the author of the Black Hill? Who's the author of the Black Hill? Who's the author of the Black Hill? Quickly बताइए क्या. Absolutely right. Mamang De. Mamang De is the right answer. The poet novelist from Arunachal Pradesh. That is Mamang De that you are having. Mamang De के ऊपर भी I've made a quick short also that how Mamang De lost her comfort zone. You know, one of most coveted jobs that we are having in India, that is becoming an IPS officer. She actually she forgot, like you know, she completely ensured that she's leaving that for the sake of her love for journalism altogether. And of course we had Mamang there all together. ठीक है. अब इको क्रिटिसिज्म कल भी हम लोगों ने दिखाया था कि इको क्रिटिसिज्म से आपके कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे. ये वाला क्वेश्चन भी आपका आ रहा है. इको क्रिटिसिज्म इज नॉट वेरी गुड. मोनिका आज आपने बहुत देर से बोला, राइट? मोनिका आज आप शांत बैठी रही, ऐसा कैसे, क्यों? तबीयत ठीक है, क्या हो रहा है? ओके, जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर ओवर हियर. जल्दी से बताइए व्हाट बिकम्स द करेक्ट आंसर ओवर हियर. Yes, eco criticism is not. Very good, Avtara. Avtara, excellent. So good to see you, Avtara. Right? So good to see you, Avtara. That's absolutely true. See, it is not an anthropocentric approach. It is rather against anthropocentricity. It's against man being at the center. Anthropos का क्या मतलब होता है? Anthropos is basically man at the center. So it is absolutely not that. In which poem does Allen Ginsberg lament his mother's insanity? In which poem Allen Ginsberg कौन से work में he is lamenting his mother's insanity? In which work are we able to see that? It is a very long confessional poem, by the way. It is a very long confessional poem that we are talking about. It's a very long confessional poem that we are talking about. कौन सी poem है ये? Likewise, Tara. Likewise, how you doing, बच्चे? How you doing? No, this is Kaddish. ठीक है? Kaddish के अंदर, Kaddish जो है 1961, उसके अंदर you are able to see, ठीक है? Kaddish के अंदर you are able to see that there is a proper talk about, not as much as Howl, but you know, Kaddish. But again, no, Plutonian ode नहीं, that is not true. अच्छा, मैच द फॉलोइंग में क्या करना था आपको? ये 18th सेंचुरी इन्होंने पीरियोडिकल्स दे रखे थे. आपको बेसिकली बताना था that who is actually responsible, you know, who are the writers who are there. Rambler कौन लिख रहा था? Rambler, remember Samuel Johnson. ये हम लोगों ने वैसे स्कोर बूस्टर बैच में भी अभी करा था टेक्स्ट बुक पे. So Samuel Johnson is there. Covent Garden Journal से कौन एसोसिएटेड है? हेनरी फील्डिंग was writing for. तो पीरियोडिकल्स ये सारे आपके क्या थे? ये आपके सारे पीरियोडिकल्स थे. राइटर्स हु वर राइटिंग फॉर दीज पीरियोडिकल्स. तो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर आपका हेनरी फील्डिंग आ रहे थे. यहाँ पर आपके कौन आ रहे थे? यहाँ पर आपके हेनरी फील्डिंग आ रहे थे. टैटलर का क्या सही जवाब हो जाएगा? व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर टैटलर?
What will be the right answer for tackler? Tackler तो बिल्कुल सही गलत नहीं होना चाहिए. Addison and Steele, okay? Addison and Steele इन्होंने ऑप्शन में दे भी रखा था. इन्होंने ऑप्शन में दे भी रखा था. बी हम लोगों ने अगेन स्कोर बूस्टर बैच में करा था. बी से कौन एसोसिएटेड है? ऑलिवर गोल्डस्मिथ. बी से कौन एसोसिएटेड है? बी से कौन एसोसिएटेड है? Oliver Goldsmith is associated with B. Oliver Goldsmith is associated with B. So Henry Fielding, Covent Garden Journal, Rambler, Samuel Johnson, Tatler, Addison Steele, B. Oliver Goldsmith. तो वो आपका सही जवाब हो जाता है. Which leading figure of the Harlem Renaissance wrote Montage of a Dream Deferred? Montage of a Dream Deferred. ये किसने लिखा है? Montage of a Dream Deferred. This is the last question that we are practicing for today. 1951 में कौन लिख रहा है? Who's the one who's writing it in 1951? अभी अभी मैंने बताया भी था, लैंगस्टन ह्यूग्स का भी करा था, द नीग्रो स्पीक्स ऑफ द रिवर. मैंने अभी ये डिस्कस भी किया था. उसका फादर कहते हैं कि आई डोंट लव माय, यस, लैंगस्टन ह्यूग्स इज द राइट आंसर. ठीक है, लैंगस्टन ह्यूग्स इज द राइट आंसर. आई वाज रियली इम्प्रेस्ड आज, लाइक यू नो, कल की कमेंट सेक्शन में जैसे आप लोगों ने, एंड वील बी टॉकिंग अबाउट एक पोएट्री फ्रॉम द मार्जिन से, एक पूरा का पूरा टॉपिक है. आज का होमवर्क काफी सिंपल है. आई वांट ऑल ऑफ यू टू स्किम थ्रू यू नो द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू अमेरिकन पोएट्री. और आपने मुझे ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू अमेरिकन पोएट्री जब आप स्किम थ्रू करेंगे, यू नीड टू टेल मी वन फैक्ट इन द कमेंट सेक्शन जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है, ये सारे जो फैक्ट्स हम लोगों ने पहले से डिस्कस कर लिए हैं, एन ब्रैडस्ट्रीट का फैक्ट, या एजरा पाउंड का फैक्ट, या वॉली स्टीवंस का फैक्ट, या एलिजाबेथ बिशप को कंटिन्यू करेंगे इनके फैक्ट्स. इन फैक्ट्स के अलावा जब आपको ऑक्सफोर्ड कंपेनियन में अभी क्लास के बाद ही यू नो पीडीएफ उसका दे दूंगी, तो आपने मुझे क्या बताना है? आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि जब जस्ट स्किम थ्रू ऑक्सफोर्ड कंपेनियन, एंड प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि जो आपका ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू अमेरिकन पोएट्री है, उस ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू अमेरिकन पोएट्री का कौन सा फैक्ट आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा और आपको नहीं पता था. अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी होती या स्किम थ्रू नहीं करी होती, इससे पहले आपको इसके बारे में नहीं पता था, तो वो फैक्ट आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है. कल की डिस्कशन को हम यही कमेंट सेक्शन से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ऑलराइट, ओके. Looks like my room except the cactus. Okay, that's really nice. That's really interesting. Absolutely right. That's nice, Neha. So we will probably we'll visit your study room so that we can have a quick tour of that. Okay, I'll catch up with all of you tomorrow at 10:30 p.m. Don't forget to complete your homework. Tomorrow 8:30 p.m. we'll of course cover your European literature module, and tomorrow there's interesting quiz also क्योंकि आपका जो Roman and Greek classical literature cover हो चुका है, उसका थोड़ा सा आपका छोटा सा quiz हम लोग लेंगे, and of course we'll move on to the next bit of writings in European literature. Fine. All right. Thanks everyone for joining. Really appreciate that. I'll catch up with all of you tomorrow then. ठीक है? Thank you so much. Thanks Himanshi. Thanks Divya. अच्छा नेहा, ह्यूग्स वाला पॉइंट आपको अभी इंटरेस्टिंग लगा. इस पीपीटी में से नहीं, जो मैं आपको पीडीएफ, आसान काम नहीं करना है, जो मैं आपको पीडीएफ भेज रही हूँ, मैं दोबारा से होमवर्क रिपीट कर रही हूँ, जो मैं आपको पीडीएफ भेज रही हूँ उसको स्किम करिए. जो पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं उनमें से नहीं, जो पॉइंट्स आप खुद ढूंढेंगे उस पीडीएफ में से, और अगर आपको नहीं पता था उस पॉइंट के बारे में पहले से ही, वो पॉइंट आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, no easy works, no easy paths to be taken. Okay, please remember that. Thank you so much, Monica. Thanks, Prerna, Tara, Satendra, Supratim, Anjali, Monica, Future Dreams, Neha. Good night, everyone. Sweet dreams. Take good care of yourselves. I'll catch up with all of you tomorrow. Take care. Bye. Thanks, everyone. Bye.